Okay, so chapter is trigonometric ratios. अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पता है ना रे? ICSE 9 और ये मैथ्स में चैप्टर है. Okay, and 22nd भी exercise correct, Anishka? Yes, sir. Sum number 28. This is last sum. उसके बाद chapter finish. If 5 cos theta is equal to 3 and we have to evaluate cosec theta minus cot theta upon cosec theta plus cot theta. Everyone on your cameras. ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे लगता है कुछ, क्या है भाई? सर मैं पिछले क्लास में नहीं था. तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? कौन सा लेक्चर चल रहा है पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ? हाँ सर. क्या? मैथ्स. ऑब्वियसली मैंने सब लिख दिया है कि तू 9th स्टैंडर्ड में है, ICSE में है. ओके, मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर इज गोइंग ऑन, 22nd भी एक्सरसाइज, सम नंबर 28 लिख दिया, पूरा लिख दिया मैंने. ओके, सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन वैष्णवी प्रसाद. हाँ वैष्णवी, and we have to evaluate, means we have to find this value. So solution, but before this we have to draw one triangle. ट्रायंगल ड्रॉ करके वैल्यूज की फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तेरा काम तो ऐसे हो गया ना अथर्व, शादी का इनविटेशन आया और तू शादी में बहुत लेट आया, तब तक खाना आइसक्रीम सब खत्म हो चुकी है. अभी क्या करेगा तू? सिर्फ फोटो खिंचा के आ जा. हाँ हाँ, ऑलमोस्ट वो पहले लेक्चर में नहीं था, जब बेसिक क्लियर किया नहीं था, पहले एक्सेस में भी नहीं था, तो अभी क्या होगा? कुछ नहीं समझ में आएगा तुझे. So this C is theta, opposite of 90 degree is known as hypotenuse. Opposite of theta, that one is known as opposite side. ये तो पता है सबको. And बची हुई side, that is adjacent. Correct? So first क्या, अरे अभी दिया क्या है हमारे पास? वैष्णवी आ रहा है सम? वैष्णवी knows how to solve. So 5 cos theta is equal to 3. This information is given. Now this 5 multiply with cos theta, correct? 5 और cos के बीच में multiplication sign है. अरे multiplication. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 5 shift that side. Cos theta is equal to 3 by 5. 3/5. तो cos का फॉर्मूला क्या है? Cos is equal to Adjacent upon hypotenuse. adjacent side upon hypotenuse. Correct? So adjacent side upon hypotenuse is equal to 3 by 5. So which one is the adjacent side? BC. So therefore हमारे पास आ गया BC and hypotenuse Upon AC. is equal to 3 by 5. But this one is a ratio. So हम लोग directly 3 and 5 नहीं ले सकते. So we have to take 3x and 5x. Correct? 3x, 5x. हम लोग ने डिस्कस किया था ये. जो लोग प्रेजेंट है उनको मालूम है. So therefore let BC is equal to 3x and AC is equal to 5x. But we have two sides now. हमें तीनों साइड चाहिए. तो in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. अथर्व गायकवाड़, तो पाइथागोरस थ्योरम बता राजा, इसमें क्या होगा? ये क्या सर? पाइथागोरस थ्योरम बता मुझे. Just explain me Pythagoras theorem we have to apply here.
90 डिग्री लिखा, अभी मुझे पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। मालूम है कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? ये तो पता है तुझे? पता है कि पाइथागोरस थ्योरम एक चैप्टर भी, ये भी पता है क्या? मैथ्स में है वो, ये पता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में है, पता है तुझे? चैप्टर है, नाम सुना है कभी भूले भटके? सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है पता है? नहीं है। सो पाइथागोरस थ्योरम इज क्या है, कभी बुक ही खोलते नहीं ना, एक बार एक्सप्लेन होने के बाद कभी ओपन किया नहीं तो प्रॉब्लम ऐसे होता है फिर। हाइपोटेनियस स्क्वायर, व्हिच वन इज हाइपोटेनियस? AC is equal to sum of square of remaining two sides. याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा? म्यूट है रे तू। मुझे लगता है तेरे सिस्टर को मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, शी विल टेक केयर ऑफ यू। Then AB not given and BC that is 3x. फाइ का स्क्वायर क्या होता है? एनीवन? सुमित तेली, फाइ का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर? AB का AB स्क्वायर एंड 3 का 9x स्क्वायर। So shift 9x that side, 25x square minus 9x square is equal to AB square. 25 में से 9 गया, 16x square is equal to AB square. So 16 किसका स्क्वायर है? 4. 4 का. So take square of 4, x की जगह पे x is equal to AB. Just write taking square root. अथर्व ये टाइप के सम बहुत सॉल्व किए रे हम लोग ने, और तू था और तूने मुझे पूछा था ये टेकिंग स्क्वायर रूट मींस क्या होता है, मुझे याद भी याद है। हाँ सर, इधर स्क्वायर रूट लेना है। 16 का स्क्वायर रूट 4। So next one, see, but we have to find cosec and cot. हमें cosec और cot की वैल्यू चाहिए, then we will put up that value in equation. So cosec theta is equal to क्या होता है cosec theta? Hypo upon opposite. Opposite side, correct? So hypotenuse क्या है? Hypotenuse is AC. Opposite side is AB. Value of AC 5x and value of AB 4x. 4x. So x cancel. So cosec theta is equal to 5 by 4. हाँ वैष्णवी, वैष्णवी is there. Next हमें find out करना है cot. Cot theta is equal to adjacent side upon opposite side. So correct क्या? Adjacent side is BC, opposite side AB. Value of BC 3x. Value of AB 4x. X cancel. Cot theta is equal to 3 by 4. So we have to write equation cosec theta minus cot theta upon cosec theta plus cot theta. Just put up the value. Value of cosec क्या है? नेहा बिहानी. Value of cosec 5 by 4. 5 by 4. And value of cot 3 by 4. 3 by 4. 3 by 4 And in denominator also 5 by 4. plus 3 upon. So first of all numerator, see numerator का जो denominator 4 4 है, तो we can subtract 5 minus 3 become 2. So 2 by 4. 4. नीचे भी क्या होगा? 8 by 4. Students, we can cancel both the denominator. दोनों denominator को हम लोग directly cancel कर सकते हैं. So these 4 4 cancel. So we have, हमारे पास है न्यूमरेटर में बचा 2, डिनोमिनेटर में 8. So 2 1s are 2, 4s are, your answer is 1 by 4. Sum solved. So the new chapter, chapter number 23. Chapter number 23, that is trigonometrical ratios of standard angle
standard angles. Okay, including evaluation of an expression involve trigonometric ratio. अभी ये है क्या? We have to know here the values of standard angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are the standard angles. क्या क्या standard बोला मैंने? 0 degree, 0, 30, 45, 60, 90. 45, 60 degree and 90 degree. So we have to learn करो, दिमाग में रखो, कुछ ट्रिक यूज करो, बट तुम लोगों को इसकी वैल्यूज एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए. तो देयर आर अनदर टेक्निक, इसकी वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करने की. क्या करने का? ट्रिक यूज करने की व्हेनेवर. लेकिन ट्रिक यूज करते 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 तुम लोग के वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि एग्जाम में तुम लोग जाओ और वो ट्रिक यूज करो. बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये टेबल देख के आधे लोगों को डर लगता है इतने वैल्यू कौन लर्न करेगा. तो अभी वो लर्न नहीं करना होता है. जस्ट आई विल शो यू कि क्या करना है तुम लोग को. This table is given and we have to find value of sine, cos, tan, cosec, sec and cot. So just sine. So first students you have to, तुम लोगों को सिर्फ sine की वैल्यू लर्न करके रखनी है बस. And the values of sine are in ascending order, सब ascending में. तो sine 0 is 0, sine 30 is half, sine 45 is 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2 and sine 90 is 1. 1. Are in ascending order. Okay, so now cos totally इसके opposite में, whatever the sign Opposite. ये 1 है तो just take this 1 here. Last value become first, second last value become second, third value is as it is. इसकी second value become its second last and this 0 this become last. Understood? हाँ, अभी एक होता है इसके बाद cot, सॉरी tan होता है tan. So सर tan होता है ना? हाँ ना, मैंने भी tan ही बोला ना. tan is equal to, tan का फॉर्मूला है tan is equal to sin upon cos. ये फॉर्मूला है होता है tan का. ठीक है, tan का ये भी फॉर्मूला होता है. तो अभी ध्यान दो, सपोज ये न्यूमरेटर है, sin है ना न्यूमरेटर है एंड cos डिनोमिनेटर है. ओके, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही क्या है, tan is equal to sin upon cos. तो 0 upon 1 कितना होगा? 0 upon 1 0. 1 by 2 and root 3 by 2. तो 2 2 कैंसल, क्या बचेगा? Root 3. 1 upon root 3. 1 upon root 3, ऊपर 1 है नीचे root 3. 1 upon under root 2 and 1 upon under root 2 दोनों कैंसिल हो गए. 1. Now this root 2 and this root 2 cancel. तो क्या होगा? root 3 by 1 means only root 3. Root 3. And 1 by 0, that value is always not 1. Not defined. Not Not defined. defined. जैसे tan, sin और cos एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे tan और cot भी एक दूसरे के अपोजिट है. Opposite. तो ये नॉट डिफाइंड कम फर्स्ट, रूट 3 सेकेंड, 1 हियर, 1 by root 3 यहाँ पे आया और 0 यहाँ पे गया. काम खत्म. अगेन वी नो दैट साइन का रेसिप्रोकल क्या है रे? कोसेक है ना. साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक. तो जस्ट राइट कोसेक एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ साइन ना उसका रेसिप्रोकल लो. तो 0 का रेसिप्रोकल आएगा तो नॉट डिफाइन आएगा. सर बट पहले सेक कुछ Yes, sir. करना, अरे कुछ भी लो पहले. ये तो टेबल है, वैल्यूज पुटअप करनी. यू कैन टेक सेक. तुम लोग को कोसेक लेना है, कोसेक लो. सेक लेना है, सेक लो. तो साइन का भी रेसिप्रोकल लेना है हमें. साइन है कोसेक का रेसिप्रोकल. तो 0 तो नॉट डिफाइंड. 1 by 2 का उल्टा करेंगे क्या होगा? 2 by 1 मींस 2. 1 by root 2 का उल्टा करोगे root 2. Root 2. root 3 by 2 का उल्टा करो 2 2 upon by root 3. and 1 का 1. 1. So cosec and sec again क्या एक दूसरे के क्रॉस में चलते हैं दोनों. So this 1 इसका लास्ट 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट 1 आएगा. Then 2 upon root 3 आएगा. Then this root 2
then 2 goes here and not defined. पूरा chapter is depend upon this table. अगर ये ध्यान दे लर्न कर ले पूरा टेबल कि तेरा कैमरा ऑफ था ना, तो कैमरा ऑफ वाले लोगों को मैं एक्सक्यूज नहीं देता हूँ। वो तो मैंने जानबूझ के तेरे को चिल्ला चिल्ला के लाया हो ऑन करने को बोला, नहीं तो तेरे को कुछ पड़ी भी नहीं है ना। मैं अगर बोलता ही नहीं तो कैमरा ऑफ करता ही नहीं और फिर तेरे को डाउट भी नहीं आता। सो टेबल इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, तू सिर्फ लर्न कर ले, या मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तू उसको देख ले, देखता हूं मैं तू कितना अलर्ट है। ओके, so you people just send me your email id, I will add in Google Classroom, you will get the recording. So exercise 23a, so I will solve, there are 6 sums, I will solve only 2. First one, sin 30 degree and cos 30 degree. So in between these two क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन। तो साइन 30 की वैल्यू चेक करो क्या है, सीधे साइन 30 क्या है रे? साइन Half. 1 1 upon upon 2. एंड cos 30 Root 3 by 2. Root 3 upon 2. root 3 3 by 2. So multiplication is upon Root 3 by 4. denominator root 3 into 1 root 3 and 2 into 2 become 4. Sum solved. Understood अथर्वा? ध्यान देना भाई, ध्यान दे, इधर आके दर्द कर रही है तेरी, मुझे मालूम है ना इधर पेनिंग। सर, इसमें भी हमें मार्किंग। Sorry, you have marking, very good. Atharva Gaikwad, just pay attention Raja. Well, can I rub this one? Yes, sir. तूने नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखा है अथर्वा, I know. We will do question number 6, sum number 6, sorry, of first. Cos square 60 plus sec square 30. Vaishnavi Prasad is not there. Vaishnavi, bye. कल मिलते हैं. And tan square 45. So cos 60 की वैल्यू देखो क्या है? What is the value of cos 60? Half. हाँ? Half. 1 upon 2 1 upon 2 ना? Cos 60 1 upon 2, but whole bracket square है तो square आएगा. Sec 30, where is sec? Sec 30 is 2 upon root 3 root 3 2 upon root 3, again whole bracket square. And tan 45 1. 1. again the square. तो square करना है, 1 का square 1, 2 का square 4. Again the square of 2 is 4 and square of root 3 is 3 and this one is 1 only. So now the LCM is, LCM क्या है? 12 है ना? Yes. So Yes, sir. you have to multiply this 2 by 3 and this one by 4 and this one by 12. So we have 3 plus 4 4 is 16 plus 12 upon 12. upon So this become 28 and 3 31. 31 upon 12. Sum solved. Understood?